Sikhism, world's fifth largest religion, remains a mystery to most in the West. Despite having a significant population in America, only 11% of Americans know a Sikh. The turban-wearing population is impossible to miss and often mistaken for Muslims. So today, I have chosen to go out and learn about the Sikh culture through food and also find out about the farmers' protest, which saw a prominent support from the Sikh community. Most Sikhs are Punjabis, but not every Punjabi is a Sikh. Punjab is India's top agrarian state, making it India's breadbasket. Sikhism has a concept of serving meals in their temple to those who need it. This act of servitude is called langar. Langar, which means kitchen in a Sikh temple or Gurudwara, is run by Sikh volunteers who feed people regardless of their race, religion, gender, or wealth. Langars have played a prominent part in supporting the farmers in India who've been protesting in Delhi since November 2020. Today, I'm going to be visiting a Gurudwara to learn about langar and gain some insight on the farmers' protest. गुरुद्वारे में निशान साहब आप देखोगे बड़ा ऊंचा लगाया हुआ है ताकि दूर से रात को भी पता चल जाए, अंधेरे में भी पता चल जाए। अगर हम वहां जाएंगे तो हमें हर एक तरह से मदद मिलेगी। कुछ हमें बताएंगे कि कैसे आप लोग के लंगर लगते थे और कब होता था? तकरीबन 550 550 साल तो ही ये जो लंगर ਦੀ परंपरा ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੀ परंपरा ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੋ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ परंपरा ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਲੱਡ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ विशेष तौर पे है उन्होंने लंगर लाए ने। और कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से आते हैं पढ़ते हैं तो उनके लिए कई बार इधर आते हैं, सुबह भी दोपहर को भी शाम को भी उनके लिए लंगर फ्री है। वो इधर आते हैं लंगर चखते भी हैं लेकिन सेवा भी करते हैं तो उनको अपना जो घर है माँ प्यो सब वो कहना हमको याद आते हैं कि हमको घर की खाना जो है इधर मिल जाता है। तो ये सिखिज्म में ये कार्य का और सेवा का बहुत जोर है। गुरु साहब जी ने बाणी विच ऐसे फरमाया विच दुनिया सेव कमाई है तो दरगाह बैसन पाई है कि आप जो आयो समाज के लिए कुछ अच्छा करो कि सभी में वो परमात्मा खुद है। Although Mr. Singh and Mr. Gulati were very informative on educating us on langar, they however refused to comment on the protests. We did find signs around the temple which showed support for the protesters. Farmers in India have been protesting since November 2020, only 2 months after the 3 farming bills were passed. Farmers took the protests to Delhi to reverse the highly controversial farm bills passed by the parliament in September of 2020 without any dialogue with the farm unions. The first bill creates unregulated trading spaces, forcing farmers to do business outside the state-regulated wholesale market. This means that there won't be a state minimum which the farmers can sell at, which may result into corporations taking advantage of them. The second bill sets the framework for farmers to deal with corporations with little to no oversight of the government by switching from traditional farming to contract farming. There has always been a storage limit set by the government to control the prices. Which leads us to the third bill that removes the storage limit unless it's in case of war, famine, or such drastic measures. This means buyers can hoard food and create artificial demand which they could use to make the food expensive. What the bill generally means is the lack of government involvement will allow big corporations to take advantage of the farmers and dictate the market. I'm going to meet owner of the 28-year-old Punjabi Deli to see what he has to say about the new bills. I had heard a lot about the Punjabi Deli in New York City, which is known for its cheap prices and rich culture. I entered the deli and suddenly felt like I was back in my childhood in India. Snacks and the holy music echoing through a narrow hallway. It was like stepping back in time. The deli even has a wall of Polaroids featuring their guests and some celebrities.
Jani, the owner of the store, was running late due to traffic and parking, so I got to talk to his little brother, who updated us on what's happening around the store. इन्होंने जब डेली ऊपर की थी 92 में ऐसे थी हैं? क्या ये जानी नहीं है? अभी ऐसे This is in 92? 92 Oh my god, this is Jani. जब डेली ऊपर की थी Yeah, he was so like. ये मगर वो सीडी सूडी पड़ी है ना हाँ अच्छा अब आप लोग सीडी और ये सब नहीं करते हाँ वो जब जिस दिन से ये यूट्यूब आया ना सारा इलेक्ट्रॉनिक जीरो हो गया कोल्डलेस मिलती थी कितना भी मिलता था हाँ वो हैंडीकैप मिलते थे अब एप्पल वाले फोन में सब कुछ यार सारे पूरा कर देता वो मन की बात समझ लेता Jani's little brother arranged some chai and samosa for me while I waited. This gave me the chance to try their renowned 100% vegetarian food. में भी आपने क्यों अपने प्राइसेस क्यों रखे और कैसे रखे? अभी देखो जिसने दिन में 2 बार आना 3 बार आना इधर राइट so we have that kind of the price people can afford to eat every day. मगर हमारी फूड का ये है कि हम प्योर वेजिटेरियन है. Before he opened the deli, Jani worked as a cab driver, where he saw a problem that the drivers faced. So he came up with a solution with his deli. पहले जब 92 में इधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैक्सी ड्राइवर को ये थी nobody allows the taxi driver to use the bathroom. This was the biggest problem. ये injustice है. जी बिल्कुल सही. So आपने विद्यापीठ मेरे पास जितने कोई टैक्सी ड्राइवर कोई जानने वाला कोई इधर का ईस्ट विलेज का कोई भी बोले ना आई हैव टू यूज द बाथरूम आई हैव इट यू नो वी आर ह्यूमन बीइंग वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन टू आई हैव टू पे फॉर द वाटर बट आई नो माइंड इट. That is the problem. What is your opinion on what's happening to the farmers? हमारे लोग मर जाएंगे वो छोड़ेंगे नहीं जमीन वो लेकर इसको हरा कर जाएंगे उसको उनको चाहे 5 साल भी बैठना पड़ गया ना क्योंकि अगर आपकी जमीन छीन ली आपके पास कुछ भी नहीं रह गया. अगर आपकी ना 1 फुट इतनी भी जमीन कोई खोले ना कत्ल कर देते हैं जमींदार. वो बोलते हैं आपको जमीन नहीं दूंगा ये मेरा हिस्सा है इतना. इसको छोड़ देगा मोदी को. जानी जी आपको डर नहीं लगता लाइक अगर आपके कस्टमर्स देखेंगे आप ये बोल रहे हो आपको आप क्या कहना? ना मेरे पास कोई ऐसा आया ही नहीं. जितना भी पंजाब का फार्मर है ना वो चाहे केरला का है वो चाहे मैंगलोर का है तमिल है चाहे उत्तराखंड का है उसको होमलेस कर देंगे. जितने बिल पिछले साल में इसने पास किए सारे स्टडी कर लो वो बिल सारे अंदानी बानी ने बनाए इसको दिया इसने स्टैंप लगा दी. ये हुआ है हमारे साथ. मगर जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है और हमारे लोग बहुत गरीब है इंडिया में. जितना गोदी मीडिया है ना सॉरी टू से दे आर पेड बाय द गवर्नमेंट. जो बोले गए मगर उसके अंदर अपनी जमीर मर चुकी है. The protests in Delhi have seen a decline since April. Part of it is due to COVID and most of it is because of harvest season. The protests have gained attention worldwide, but the Indian government has no plans on revoking these bills. The Modi government has used the influence in media to create false narratives around the protests and hide police brutality. Regardless, the farmers of India stand strong as they know that their support throughout the world only grows.